Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for tuning in. Today, we have with us Amna Khalid, a very dear friend and a very capable student who had got her acceptance at King Edward Medical University and a couple of other places, and she chose King Edward. And her classes are going to start soon. So, we're going to ask a few questions from her that will eventually help all the pre-meds out there in deciding what their future would look like. So, thank you so much, Amna, for taking out time and joining us here today. Would you like to give a little introduction of yours as to where you belong and all that? Okay, so Assalamu alaikum, and thank you so much for having me over. My name is Amna Khalid, and I recently completed my FSC from Punjab College. I had 1094 over 1100 marks in FSC. That makes fourth position in the entire board. And then I wrote my NMD CAT. I had 189 over 210 in NMD CAT. I wrote my NUMS test. I had 137 over 150 in NUMS. I got accepted to King Edward as well as AMC and um, yeah, my merit is merit number 40 in King Edward, or I do belong to Islamabad. So, yeah, that's the brief introduction. Well, that is really interesting. You belong to Islamabad and eventually you chose a university that is all the way in another city in Lahore. But we'll get Yeah. more on that. But first, we want to know how was your journey as a pre-med student? Because apparently for this year, it has been really challenging with COVID being a part of our FSC and A levels, and then with the sudden changes that happened with the NMD CAT, the syllabus, and everything, the pattern. So, how was the prep for MD CAT? How did it look like for you? And then for NUMS and all? Okay. So I basically started my pre-med journey back in my second year. I joined the early STEP session that was provided by STEP. It is an affiliated institute with Punjab College, जिसमें मैं पढ़ रही थी. So it was basically a Saturday Sunday session. जिसमें उन्होंने 30 to 40% of the syllabus of MDCAT of the former year they got it covered. तो हमें ना like we got a hang of the entire structure or the question pattern you'd say कि हमें समझ आ गया था what sort of questions can we expect. So by the time I got done with my boards, I had gone through a couple of topics that were to appear in the NMD CAT. लेकिन फिर PMC introduced a new syllabus. They introduced logical reasoning. They increased the number of MCQs of physics and they made them equal to those of chemistry. So there were slight changes. और फिर अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस मोल्ड हुआ, हमारा स्केड्यूल मोल्ड हुआ एंड देन आई रीजॉइन्ड द अकेडमी. आई जॉइन्ड इट राइट आफ्टर माय बोर्ड्स. लाइक आई हैड माय लास्ट बोर्ड एग्जाम on Mhm, 27th July and I joined the academy on 28th July. So I didn't even, take a break of a single day and that was mhm. it. तो हम लोगों का फिर सिलेबस अकेडमी से कवर किया मैंने एंड देन once the syllabus was covered तो फिर मैंने break ली and I started preparing on my own at home. So yeah, up till my NMD CAT. Right. Well, that is really interesting. And given that you joined an academy, I would really love to know how much the academy actually helped in preparing you for the NMD CAT. Because essentially it was the same syllabus that you studied before in FSC. But Yeah. would you like highlight on how effective is an academy and should one pre-med who is opting for MD CAT join an academy? Okay. So basically, joining an academy, I think, is a very subjective question depending upon how you study because हर बंदे को पता होता है कि वो कैसे पढ़ते हैं. I personally believe कि I study better with a bunch of friends if they are undergoing the same grind क्योंकि बहुत hectic routine होता है. तो अगर आपके साथ you have some good friends जो आपके साथ enjoy भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, they're giving you a sense of accountability or you have this routine and when you feel like overwhelmed तो आप उनसे बात कर सकते हो. You can tell them, I feel burnt out. So they do help you. So that is primarily why I joined an academy to have like-minded people who have the same goal, uh, to be surrounded by them. And added to this, then teachers जो mentors होते हैं they do have an experience of several years. They can guide you कि कौन से topics are high yield or which topics to prepare in what sense. इसके अलावा जो है आपको they provide you information updated रखते हैं. क्योंकि कुछ बच्चे by the end वो social media को थोड़ा limited कर देते हैं. तो फिर they are not they don't get to know कि क्या-क्या न्यूज़ है और किस तरह डेवलप हो रही है सिचुएशन. सो दैट वे हमारी अकेडमी आई थिंक दैट उतना ही हेल्प होता है. बाकी तो वो गाइडेंस के अलावा आपको समझा सकते हैं, पढ़ना आपने खुद होता है. आप जितनी एफर्ट डालोगे उतना ही फ्रूट मिलेगा. Right, right. That is very true. And
With that experience, I'm pretty sure you did not join an online academy, but you might have happened to, do online question banks such as MedAngle, etc. So, was that a part of your journey? Okay, I did not personally do MedAngle, but the hype was actually real, and I've heard many people benefited from that. I did the question banks that were provided by TEPS, जिसके साथ contract था PMC का, and the organization that was actually conducting that computerized NMT CAT in my year. तो उनके मैंने क्वेश्चन बैंक्स एंड में अटेम्प्ट किए थे, और आई थिंक अगर अभी भी जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं और जो करेंगे, तो दे शुड डेफिनिटली गो फॉर द क्वेश्चन बैंक्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय पीएमसी उनके साथ में, बिकॉज़ वो क्वेश्चंस दे आर डेफिनिटली रिपीटेड। राइट राइट राइट, या दैट इज वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई फील लाइक जो एमडी कैट के साथ साथ क्वेश्चंस हो रहे थे, बिकॉज काफी दिनों बाद आई हैड माय एमडी कैट ऑन 26, तो हुँ, एसेंशियली हुँ। 25 डेज में 2 दफा एमडी कैट हो चुका था। तो मैंने वो हुँ, क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए फ्रॉम ऑनलाइन एंड एल्सवेयर जहां से भी मिले, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस गॉट रिपीटेड। सम वर लाइक डिटो कॉपी एंड सम वर चेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स एंड ऑल, और फिर उसको हुँ। थोड़ा सा बदल के उन्होंने हाँ। रिपीट कर दिया। तो दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट। तो दैट इज गुड इनफ, फेयर इनफ। एंड उसके अलावा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद नम्स, बिकॉज नम्स वाज रियली कम्पिटिटिव, एंड उसमें ऐसे कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे भी नहीं जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो, इट वाज हुँ। बेसिकली जनरल। तो उसका हुँ, कैसा हुँ। एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, तो मैं ना प्राइमरीली फ़ोकस एनएमडी कैट पे कर रही थी। आई वाज़न्ट इवन फ़ोकसिंग ऑन नम्स। मैंने कहा कि मैं एक ही चीज़ को करूँगी फ़ोकस और उसको अपना बेस्ट दूँगी। तो ताकि मेरे सर पे भी सवार ना हो, आई डिडन्ट इवन स्किम थ्रू द सिलेबस ऑफ नम्स कि फिर मुझे टेंशन होगी कि मुझे नहीं आता है। मेरा 30th सितंबर को था एनएमडी कैट और मेरा 3rd अक्टूबर को था नम्स। सो आई बारली हैड लाइक 2 डेज़ इन बिटवीन, और मैंने 30th सितंबर को आकर शाम को व्हेन आई वाज़ बैक फ्रॉम माय एनएमडी कैट, तो मैंने आकर सिलेबस फर्स्ट टाइम देखा, एंड आई वाज़ एक्चुअली रिलीव्ड बाय द फैक्ट कि वो सिमिलर ही था। तो दैट वाज़ अ गुड थिंग, और आई थिंक उसके बाद मैंने कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की थी। आई बारली स्किम्ड थ्रू अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम द फेडरल बोर्ड बुक, और उसके बाद आई डिडन्ट इवन टच केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड लॉजिकल इंग्लिश। तो ये 3 मैंने टच भी नहीं किए थे, और आई वेंट टू माय नम्स, और नम्स आई थिंक इट वाज़ गुड बिकॉज़ इट वाज़न्ट आउट ऑफ सिलेबस एट ऑल, और दूसरा इट वाज़ वेरी जनरल एंड बेसिक, मतलब बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वर बीइंग टेस्टेड ओवर देयर। सो या दैट वाज़ इट, और आई गेस कि इस तरह कोई भी ना करे, मेरी तो मेरे ख़्याल से हमारे टॉपिक्स मैच कर गए थे, इसलिए मैं बच गई थी, वरना जिसने नम्स को फ़ोकस करना है वो सिलेबस को पहले पढ़े, और पहले से ही पढ़ के रखे कि कितना उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए और क्या-क्या टॉपिक्स जो अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर करें। सो या, और आई थिंक फेडरल बोर्ड बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर नम्स। बिल्कुल ठीक हो गया। सो फेडरल बुक बोर्ड्स फॉर नम्स एंड फॉर एमडी कैट, उसके लिए भी यूड सजेस्ट फेडरल बोर्ड आई गेस। अच्छा, ओके, सो आई डिड माय एफएससी एज़ वेल एज़ माय मैट्रिक फ्रॉम पंजाब बोर्ड, और मुझे पता था कि ऑफ कोर्स इफ आई हैव स्टडीड पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स फॉर 2 होल ईयर्स, तो मुझे वो रिलेटिवली बेटर आएँगी एज़ कंपेयर्ड टू फेडरल बोर्ड की बुक्स। तो मैं हर रोज़ ऐसे करती थी कि व्हेन आई वाज़ स्किमिंग थ्रू सर्टेन टॉपिक, तो मैं पहले लेक्चर नोट्स पढ़ती थी व्हिच आई यूज्ड टू राइट माय सेल्फ ड्यूरिंग द लेक्चर्स अकेडमी में। उसके बाद मैं पंजाब बोर्ड की बुक से वो सर्टेन टॉपिक रीड करती थी, देन आई यूज्ड टू रीड दैट वेरी टॉपिक फ्रॉम फेडरल बोर्ड बुक, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करती थी। तो या दैट वाज़ इट। तो फिर मैंने फेडरल बोर्ड की भी बुक से जो इंक्लूडेड चैप्टर्स थे वो 4-5 बार तो पढ़े ही होंगे। श्योर श्योर श्योर, राइट। सो या आई गेस बिकॉज ऑब्वियसली जो के शुरू से ही फेडरल बोर्ड से, सॉरी, पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा हो, शिफ्टिंग वुड बी रियली डिफिकल्ट। जैसे मैंने ए लेवल्स की हुँ, बुक्स पढ़ी और फिर जब पंजाब बोर्ड की या फेडरल की पढ़नी पड़ी, तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट यूज्ड टू द पैटर्न जिस तरीके से वो लिखा हुआ था, बट या हुँ, फेयर हुँ। इनफ। सो माशाल्लाह, वी नो दैट यू गॉट योर एक्सेप्टेंस एट किंग एडवर्ड एंड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज। So did you apply elsewhere, maybe in private medical colleges? Because जब तक एडमिशन का नहीं पता था, just to be certain. Okay, yes. So, PMC portal पे there was this option available कि आप you have to forward your result, NMD CAT result to various universities all across Pakistan. मैंने ऊपर से लेके नीचे तक हर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिया था। मतलब आई डिडन्ट इवन मिस आउट अ सिंगल वन बिकॉज़ आई वाज़न्ट श्योर ऑफ द फैक्ट कि एग्रीगेट क्या बनेगा और किस तरह फॉल करेगा। आई वाज़ वेरी अनसर्टेन अंटिल द मेरिट लिस्ट केम आउट। तो मुझे तो ये नहीं श्योर था कि मेरे मेरे जितने मार्क्स जो हैं वो कितने बच्चों के हैं पाकिस्तान में या क्या है। तो फिर मैंने पूरी हर यूनिवर्सिटी को कर दिया था, और अभी तक भी मुझे आ रहे होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कॉल कि डू यू वांट टू अप्लाई या कुछ, तो फिर ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू अप्लाई नाउ, लेकिन या आई डिड फॉरवर्ड माय रिजल्ट, दैट वाज़ इट।
Sure. Well, nice. And Acha, and before we move on towards your decision between AMC and King Edward, why don't you tell us a little about Aga Khan? So, did you have like AKU in mind when you were applying, and did you aim for it? Maybe उसके लिए क्या procedure था? And test में you did not make it because test foreign ही आ गया था FSC के exams के बाद, right? So, can you give a few pointers कि जी उसमें किन चीजों पे ज़्यादा मेहनत की जा सकती है in advance? Acha, AKU test, yes, I did give and I couldn't clear the test. So basically, जो मेरी थी ना shortcomings, that which I've analyzed are कि मैंने उसके लिए मतलब laser focus करके उसके लिए नहीं पढ़ा, because the syllabus was very broad, as compared to an MD-CAT or NUMS. उनका बड़ा concise syllabus था, इसका बहुत vast syllabus था. I guess all the chapters from our FSC books were included. एक दो शायद नहीं थे. तो फिर मैंने इसके लिए आगा खान टेस्ट के लिए आई जस्ट गेव लाइक 4 days आई गेस, लास्ट 4 days. तो 4 days में ऑफ कोर्स आई वाज ओनली एबल टू कवर दी हाई यील्ड टॉपिक्स, और उनमें से मेरे ख्याल से हार्डली कुछ आया था, जैसे किंगडम एनिमेलिया और प्लांटाई और फिजिकल ऑप्टिक्स और इस तरह के थे. Yeah. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था, फिजिकल ऑप्टिक्स से भी एक एमसीक्यू आया था, बाकी ये किंगडम्स नहीं टेस्ट हुए थे बिल्कुल भी. सो या अच्छा. तो आई Okay, थिंक great. अगर अच्छा, किसी yeah. Go on. ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर किसी बच्चे का एकेयू इज़ द प्राइमरीली वो फ़ोकस उसी पे कर रहा है, तो आई गेस एकेयू को प्रेप करो आप अच्छे से, तो आपका बाकी सब कुछ उसी में कवर हो जाएगा, बिकॉज़ दे हैव दिस एक्सट्रीमली वास्ट सिलेबस. बिल्कुल ऐसा ही. I totally agree. अच्छा, we have Laiba with us now. For ओके. those who don't know Laiba is also a current batchmate of yours at King Edward, and she also went through the journey with us. In fact, she was a person who took a gap year and then had a lot of experiences with different universities, and eventually she ended up at King Edward. So I'll be adding her to the stage, and we will have an introduction of her. Assalamu alaikum, Yeah, Laiba. Assalamualaikum. Yeah. Are we audible to Walaikum. you? How are you guys? Yeah, you guys are audible. I'm really sorry for being very late. I look very tired, I know. I just woke up a minute ago and I rushed to the broadcast. I couldn't make up to time. Yeah, but matlab, I'm just very sleepy all the time. I'm so sorry. Yeah, it's no problem at all. But thank you for being here. So, Yeah, we're you're already welcome. talking to Amna about how her journey was as a pre-med student and to the university. So, why don't you start with giving a little introduction of yours to whoever is watching or may watch? Okay, so I'll start with myself. My name is Laiba Khalid and I live in Islamabad. And I'm glad to know that Amna is from Islamabad as well. I stalked her as a kid. And and I started from Fazaya. Fazaya into college Noor Khan, as I said, it's very long, but yeah, I would say it. Fazaya into college Noor Khan, Chitrala Rawalpindi. And I took a gap year. I don't know, I took a gap year. Yes. I couldn't make it last year. I couldn't make it by 0.1%. And then the next year, I don't know what I did extra, but I just did what I did the same year. And yeah, I got a question K. That's it about me. Uh, as for myself, I don't know if you guys want to listen, but it's just that I like to write, I like to read, I like to speak, and these three things are always in me every time, everywhere. And as Yeah. I'll wake up more, I'll start to think more. Sure. I'll definitely do that. And mentioning that you did take a gap year, would you like to mention, KG, for anyone who's improving this year, what are some pointers that they should take care of? किन चीजों पे ज्यादा focus करें, या should they take a particular academy? जैसे भी हम आमना से बात कर रहे थे, and she highlighted कि academies do help a lot. तो extra help की Hmm. जरूरत है, या what would you point out for them? अच्छा, I think ये हर बंदे पे वेरी करता है. Like you cannot really say कि for everybody, like according to me, कि हर एक के लिए academy helpful होगी या for everyone, it's very important कि हम लोग जो हैं वो ये सोचें कि हम क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही. Like for me, academies were always a burden. So I did not join academy in matric. I did not join academy in FSC. मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी for um, for MCAT this year, but I did join academy last year जब मैंने gap year नहीं लिया था,
जो मैंने फर्स्ट टाइम हम्म, प्रिपरेशन की थी, एंड इट वाज रियली बर्डनसम फॉर मी। मुझे लगता है अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपका क्यों एडमिशन नहीं हुआ था, तो आई वुड से कि आई आई यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड, क्योंकि अब देखो जैसे मैं आई स्लीप आई स्लीप आई स्लीप इन टाइम, आई वेक अप इन टाइम। आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन इसको आप कहोगे कि भाई 2 घंटे बाद उठ जाओ। आई वुडंट बी आई वुडंट बी मैं बहुत सोती हूँ, मैं सोऊंगी। तो इट्स जस्ट दैट माय ब्रेन वर्क्स वेल। तो आई थिंक अब मेरे लिए अकेडमीज वेरेंट बेनिफिशियल। द नेक्स्ट ईयर जब मैंने इस साल जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आई डिसाइडेड दैट आई डू व्हाट व्हाट सूट्स मी। आई वुडंट फोर्स पीपल्स ओपिनियन ऑन मी, बिकॉज मैं पहले वो करती थी कि यार सब अकेडमी ज्वाइन करें, मैंने भी करनी है, व्हाई नॉट। तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी अकेडमी। आई स्टार्टेड विद वर्किंग ऑन माय वीकनेसेस। सो या नाउ माय ब्रेन इज वर्किंग। सो फर्स्ट आई रियलाइज कि भाई मेरी फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी ऐसी थी, बिकॉज हमारे फिजिक्स की टीचर वाजंट वेरी इस तरह के आपको एंट्री टेस्ट की वो तैयारी करा देंगे इन कॉलेज। सो मैं कॉलेज में भी नहीं जाती थी अकेडमी, माय फिजिक्स वाज लिटिल वीक, इस लिहाज से कि आई थिंक मैं एम कैट ना दे सकती उस फिजिक्स के साथ। प्लस दूसरी बात ये है कि मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने तैयारी की थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसमें ना इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, बिकॉज मुझे लगता था भाई मुझे तो सारी इंग्लिश आती है, मुझे जरूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने की। लेकिन जब एम कैट की इंग्लिश होती है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन इंग्लिश, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर वोकैबुलरी, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रामर। वो आपको आपको याद करनी पड़ती है, आपको रटने मारने पड़ते हैं उनके रूल्स के। सो यू हैव टू गिव इट टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने एक टीचर थे, ठीक है, उनसे पढ़ा था। आई कैन राइट नेम हिम, हिज नेम इज सर अहमद। वो भी ऑर्बिट में पढ़ाते हैं। ही वाजंट एसोसिएटेड विद एनी एकेडमी एट दैट टाइम। तो हमने कुछ बच्चे थे, वी जस्ट टुक क्लास फ्रॉम हिम, और वो हमें पढ़ाते थे। तो पहले वो फिजिक्स? किफ्स में पढ़ाते थे किसी टाइम पे, या फिजिक्स। और एक ओ, सर मैंने थे, भी सर पढ़ा है। सुहेब। ओके, या सर आई सुहेब से रिमेम्बर भी यू। पढ़ा है। ओके, You सी remember अब्दुल्ला। me? Have we met? No, we haven't met, but I remember names. It's my brain is very. I remember names. अच्छा So you I you people remember studied Amna at the Khalid same in my class. academy? अच्छा, होल्ड ऑन, ओके। अच्छा, हम मिले होंगे फिर कहीं, आई डोंट Wow, हम that मिले is नहीं that होंगे। is definitely a coincidence. नो। Maybe, but चलो अब A जा रहे हो pleasant सारे one. King Edward, माशाल्लाह से सारे मिल लोगे. The cream of Pakistan finally going to King Edward. So yeah, हाँ, the that was cream of actually Pakistan finally going to AQ. अच्छा या अबाउट एकेयू, बल्कि एकेयू पे भी आते हैं. आई एम रियली रियली इम्पेशेंट टू आस्क के मतलब मेरी लाइबा से भी इस बारे में बात हो रही थी. सो यू पीपल डिसाइडेड टू चूज किंग एडवर्ड, राइट? एंड अपेरेंटली द आर्मी मेडिकल कॉलेज इज एट टॉप ऑफ द बोर्ड फॉर दोज हु अप्लाई एट नम्स, और फिर इसी तरह किंग एडवर्ड इज टॉप ऑफ द बोर्ड हियर. So why do you think you chose King Edward over AMC, given that both of you were in Islamabad and AMC is relatively near you and your home and all? So why did you choose King Edward? So can Amna, you can go first and then Laiba can follow. ओके, Yeah. सो बेसिकली मेरे एंड पे तो ये था कि इवन दो माय पेरेंट्स दे वांटेड मी टू स्टे हियर, दे वर लाइक कि आप एएमसी ऑप्ट कर लो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप डॉक्टर भी बन जाओगे, साथ यू विल बी हैविंग अ रैंक टू। लेकिन आई चोज़ एएमसी बिकॉज़ ऑफ आई थिंक 2-3 रीज़न्स थी, लेकिन जो आउटवे करी थी बाकी सबको, इट वाज़ दिस बिकॉज़ उसका मेरिट जो है इट इज़ वेरी हाई। तो इफ यू मेक इट देयर, यू आर वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि जो आपके साथ बच्चे बाकी आएँगे, वो भी दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी ड्रिवन और बड़ी मोटिवेटेड और अच्छे बच्चे होंगे, तो इट्स वेरी गुड टू सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल। तो Mm. ये एक बहुत बेसिक रीज़न था जिसकी वज़ह से आई चोज़ दिस। और इसके अलावा आई थिंक ये या इट आई थिंक इट दिस वाज़ इट कि मुझे ये था कि अगर सबसे अच्छे वाले में हो रहा है, सबसे जिसमें मुश्किल है घुसना एकेडमिकली, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू गेट इन देयर, तो अगर हो रहा है तो यू शुड डेफिनिटली गो फॉर दैट। Right, right, sure. And Laiba, what were the reasons for you? I think I'll support Amna's answer as well. एक पॉइंट तो ये कि देखो अब्दुल्ला, जो एम्स है ना, उनकी Mm-hmm. जो इनटेक होती है बच्चों की, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90 100, बहुत ज्यादा भी होगा तो 150 होते होंगे। Yeah, But for 150, KE, right? it's like 315 every year, okay? 315. Mm-hmm. So they are like double the amount of the students they are taking every year than AMC. So it means like there are double the amount of people who are coming from elite educational brain and elite intellectual abilities. जिनसे आप सकोगे. So I think it's always good to interact with the people जो कि बहुत ज़्यादा लायक हो, बहुत ज़्यादा लायक हो. Because when you start to think about your own ideas, it always strengthens you. So एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये कि अच्छा
For me, it's more like I like freedom and I want to pursue my degree with freedom. So for army, it's more like that when you graduate from AMC, you are inclined to go towards some place. You know that you'll be ending up here. यहाँ पे आपने practice करनी है and that's your life. But for me, it's a little different. I want to, do something and a little bit about it. So I want to work more on psychiatry. So I think मेरे लिए according to अगर मैंने कुछ ऐसा join करना होता like for cardiology and something like that, जो कि already लोग pursue कर रहे हैं and it's like very good और AMC में बच्चे करके बहुत अच्छा कर रहे हैं आगे जा रहे हैं. So I would have joined AMC. लेकिन मुझे ना नजर नहीं आ रहा था अपने psychiatry से related, forensic से related वो सारा research वगैरह AMC में. So I couldn't do बिल्कुल that सही। there. मुझे लगा था कि I need some freedom and need some teachers इस तरह के जो मुझे push करें, बोले बेटे यहाँ चली जाओ, ये कर लो, वो कर लो. So I think मुझे इसलिए मैं King Edward जा रही हूँ. और अपने घर से दूर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है इनिशियली. बट उस टाइम पे मैं थोड़ी एक्साइटेड थी. अच्छा, आई वाज that is लाइक that is मैं the लो same जा रही case. हूँ. हमारे AKU के batchmates है ना, all of them are very excited to go to AKU, to go to the campus. And अब apparently the classes are online from 28th, तो सबको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि भाई कैंपस हमने कब जाना है, even though AKU is in code red. तो जो हमारे सीनियर्स है ना, they're constantly telling us कि जी अभी तो आप लोग सारे बड़े एक्साइटेड हो, जब आप आओगे यहाँ पे और हॉस्टल में रहना पड़ेगा तो काफी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और वो होम सिकनेस और बड़ा कुछ होगा, तो ये थोड़े दिनों की एक्साइटमेंट है थोड़ी सी आप लोगों की लास्ट करियर. तो लेट्स सी क्या होता है, बट डेफिनेटली अभी तो एवरीवनस एक्साइटेड टू गो टू द यूनिवर्सिटी. तो अच्छा, टॉकिंग अबाउट जाना एकेयू है, वंस टाइम तो वहीं पर अगेन. है. तो Why not जी the other अच्छा, day? Laiba did clear the test and she made it to the interview, and she had a really good interview apparently. So eventually she did not make it through the interview, and Laiba does really not know essentially कि जी किस चीज की कमी थी या किस चीज की ज्यादती थी. But if you could give a general brief कि जी जो अब आने वाली चीजें हैं, if anything they can avoid or maybe work more on, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब्दुल्ला, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई मिली, सॉरी, बट माइक थोड़ा खराब करा था. आई अच्छा अच्छा, सॉरी. वाज अब वेरी बेहतर है इंटेंट ऑन आवाज? लिसनिंग, आप क्या बोल रहे हो, बट या हाँ एम आ आई रही है. ऑडिबल? अच्छा ठीक है ठीक है. आई वाज यस सेइंग यू कि आर. वी ऑलरेडी टॉक टू आमना अबाउट AKU. अब आपका ये सीन था, सिनारियो था दैट यू क्लियर्ड द AKU टेस्ट एंड यू मेड इट टू द इंटरव्यू एंड यू डिडंट पास द इंटरव्यू. तो उसमें एंड एज फार एज वी हैव डिस्कस्ड, तो यू आर नॉट श्योर कि जी किस चीज की कमी बेशी या किस चीज की जाती थी दैट यू डिड नॉट क्लियर द इंटरव्यू. बट लाइक फॉर द कमिंग प्री-मेड्स, उनके लिए इफ यू वांट टू गिव एनी पॉइंटर्स कि जी किन चीजों पे वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं या किन चीजों को वो अवॉइड कर सकते हैं फॉर द AKU इंटरव्यू एंड द टेस्ट, तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहो. अच्छा, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो कि मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहे होते हैं. आई थिंक अगर मैंने ये ना किया होता तो ये किया होता एंड ऑल दैट. अच्छा, एक क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था. आई ना कम टू द क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछे थे, मैंने आंसर्स किए थे. मुझे लगता है कि शायद अगर मैं वो ना देती तो दे वुड हैव सिलेक्टेड मी. और उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि दे आस्क्ड मी, मतलब मैंने थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो किया था साइकाइट्री वाली साइड पे. तो पहली जब उनको एक इम्प्रेशन पड़ा था ना मेरा, दे वर लाइक यार इसने साइकाइट्री क्यों कर. Like there was some problem in my brain either, or there was some problem in the brain of somebody who's very close to me. So it was very intriguing. मतलब मुझे लगता है होना भी चाहिए. They were checking my brain first कि मेरा दिमाग sound है या नहीं है. क्योंकि मैंने कराची जाके रहना है from Islamabad. So at least my brain should work. Which seldom works. So it was very difficult for me to hide myself from myself. So मैंने तो भाई सब कुछ बता दिया था अपने बारे में. तो पहली बात तो ये कि ट्राई नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद एवरीथिंग. मुझे हर एक ने बोला था कि भाई बहुत ऑनेस्टली से सब बताना है. बट आई थिंक थोड़ा सा फिल्टर करना चाहिए चीज़ों को. यू डोंट नीड टू बी वेरी रॉ अबाउट एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछते हैं कि हैव यू एवर हैड एंजाइटी इन योर लाइफ, तो आप बस ये कह दो कि हाँ हल्की फुल्की एक दो बार हुई थी. एंड आई वाज लाइक ओके. यू डोंट नीड टू टेल देम कि भाई इतनी लॉन्ग पीरियड के लिए हुई थी एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट. मतलब if they are not until and unless psychiatrist, they won't get you कि भाई आप आके voice करो इस बात को. It means आप you have overcome that thing. They won't consider that. They just see you as a person who's anxious. So they might see you as a person who's very introvert into themselves. बात ही नहीं करेगा किसी से, मुंह ही नहीं लगाएगा किसी को.
because they really do need people जो कि groups में बैठ के बात कर सकते हैं, have good leadership qualities. So basically, people who are generally people who are very anxious are not into extroversy. You get it? So I think मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में बात कर दी थी. I shouldn't have. पहली बात तो ये है, और ठीक दूसरी हो बात ये कि अगर वो आपसे ये पूछते हैं, आपकी इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ रहे हैं, you should always mold your answers to their perspective, and their perspective is that they would like to listen. कि they would like to listen. कि अगर आपको किसी ने कोई काम दिया और वो आपसे नहीं हो रहा, तो what will you eventually do? So I think you should always say that I'll ask somebody around. I did not do that, and I wouldn't ever do that, and I know that कि मैं नहीं करूँगी. So I did not say that. मैंने कहा कि मैं try करूँगी, and I think that if you try your best and you do everything that you can in your capacity, you eventually succeed. That was my opinion of myself, and that's my opinion of the world. मैं अभी भी इस बात पे यकीन रखती हूँ. But they wanted to hear कि मैं अपने और ऐसे होता भी है, like they are right, they're very practical. मैं थोड़ी idealize करती हूँ चीजों को. It's part of myself. तो मैं वो ये सुनना चाहते थे कि I'll ask people around, I'll ask my friends, I'll ask people who are working with me in the field. तो एक बहुत ज्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट शो नहीं करना होता. Try to show yourself a little interdependent. Try to show that you would like to depend upon the people. So they would see you कि आप एक ही पे डिपेंड करोगे. वो आपको ये ना देखें कि भाई ये आ रहा है और ये तो अपनी एक ही में बैठ के एक और एक ही बना लेगा. So don't give that impression. तो एक ये चीज, गया। और दूसरी ये एंजाइटी वाली, और तीसरी ठीक। तीसरी ये कि you never know. पता है, और डिसाइड होने की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है वो आपको पसंद करे, बिकॉज इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू अ पर्सन. मुझे जरूरी नहीं है कि अगर अब्दुल्ला सामने बैठा हुआ है तो मुझे वो पसंद आ जाए. मतलब आई विल से कि ये कंपैटिबल है फॉर द सर्टेन थिंग जिसके लिए मैं इंटरव्यू ले रही हूँ. और इट डजंट मैटर कि अब्दुल्ला वुडंट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही वुडंट बी कैपेबल इनफ. इट वुड बी जस्ट लाइक कि वो मेरे क्राइटेरिया पे नहीं बैठा. और जरूरी नहीं है वो AQU का क्राइटेरिया हो. इट माइट बी द क्राइटेरियन ऑफ जस्ट वन इंटरव्यूअर. तो इस चीज को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में. पीपल कम गो, institutions come and go, but you move on and you excel, and you should, because it's in you already. दैट इज मैं ट्रू, अपने आप को दैट इज ट्रू. दिलासा दे रही हूँ. ये तो मैं नहीं, दिलासे वाली बात तो चलो टू सम एक्सटेंट कुछ लोग करते भी हैं, बट आई यूजुअली टेल एवरीवन हु डिड नॉट मेक इट टू AKU एंड मेड इट टू अ गुड यूनिवर्सिटी एल्सवेयर कि देखो, यू वर एक्चुअली डिफरेंट. यू वर नॉट एनी लेस गुड or you were not any less competitive, but you were a little different from what they wanted. So you were too good for AKU, and AKU did not require you. You did not require AKU, and you went elsewhere. But yeah, that was हाँ, some very good insight. So a lot of sibilance of good yeah, words. I'll take him. This time I will. second. Right. So, acha, so yeah, okay. I think I've talked about most of the questions here. अच्छा, there's this one more thing कि चलो लाइबा ने तो बता दिया कि जी आगे के क्या plans है. She wants to pursue psychiatry and all. तो Amna, what do you wish to pursue after you graduate from King Edward? Do you want to stay in Pakistan? Do you want to do a post grad in a particular field? इस बारे में कुछ सोचा हुआ है? अच्छा, so I think ये तो develop होते हैं, you actually change with the passage of time. So I think it's too early to be very certain कि आप pinpoint कर दूं कि मैंने क्या करना है for me. लेकिन अभी जो as it is developing, it is कि इंशाल्लाह I'll be moving abroad. That is the thought process अभी तक. और बाकी as my clinical rotations elective start, तो फिर मुझे पता चलेगा what do I have a knack for, और फिर I'll pursue that particular thing इंशाल्लाह. तो या दिस इज इट अभी तक. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, एंड वी हैव दिस वेरी कमेंट जो कि हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. इट प्रीटी साउंड्स लाइक एन ISSB इंटरव्यू, राइट? सो विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, तो ये हो गया. एंड अच्छा, डू एनी ऑफ यू हैपन टू हैव अप्लाइड एट शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन? अगर आप लोगों में से किसी ने किया हुआ हो. नो आई I डिड did नॉट. not. अच्छा, you did not. चलो ठीक है. I think we've basically answered most of the questions that I had in mind. So anything, any particular tips that either of you would like to share for the upcoming pre-med students who are applying to universities, to make their journey easier or better? Because हमारे time पे I know the journey was very difficult. So anything that you would like to say, Amna, Laiba? ओके. Yeah, starting with you, Amna.
ओके, Yeah. थैंक यू। अच्छा, सो आइड से कि हमारे टाइम में तो टाइम बहुत कम था, द ड्यूरेशन टू प्रिपेयर वाज़ बहुत ही कम थी, बहुत ब्रीफ पीरियड था। लेकिन आई थिंक कि लेवल हेडेड रहना चाहिए, कीप योर कूल, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप मेडिसिन ना परस्यू कर सको, आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ना जा सको, सो इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑलवेज़ ड्रीम बिग और अपना स्ट्रैटेजिकली प्लान करो, ट्राई टू स्टिक टू योर प्लान, डू योर बेस्ट। बाकी अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है, जो किस्मत में है, इट विल गेट टू यू, किसी भी तरह से मिल जाएगा आपको। तो या अल्लाह ताला पे फ़ेथ रखो और बस जस्ट गिव योर बेस्ट एंड नेवर सेटल फॉर लेस, बाकी एक्सेप्ट और एन्जॉय ज़रूर करो लाइफ़ को। बिल्कुल, बिल्कुल। I second that. That is really amazing what you just said. So, and nothing truer I've ever heard. Baki, Laiba, would you like I, to add anything? I would like to add few things. अच्छा, I think I came late, तो आप लोगों ने वो बात कर ली होगी इन चीज़ों के बारे में कि how to prepare and how to start preparation and etc etc. So I Yeah, would yeah. like to add few things for, I don't know, आमना मेरे ख्याल में fresh थी. I was a repeater, so I would like to mention few things. अच्छा, I think Okay. कि जब मैं fresher थी ना, तो the only thing which ached me a lot was the anxiety. क्योंकि हमारे टाइम पे it was 2020. It was 2020. It was the ugliest 2020. So it can Yeah. give anxiety to any human, any human. So it was very difficult for us to, start preparation in that period. जहाँ हर जगह pandemic था, it was the first time, and we weren't able. और मेरे लिए acceptance is a little difficult than the normal people. So मैंने बताया कि I just idealize things. So there might be a lot of people like me जिनके लिए मुश्किल होता होगा. So I think I would just say कि even if it's taking one more year, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, ठीक है? पहली बात, एक साल में कोई हुँ। बूढ़ा नहीं होता. You just get mature, you get to know a lot more variety of life, you get to know a lot more yourself. So if you are given a chance to improve, do improve. It's not a gap year, it's an investment year. So I am not regretting even a single moment of this past year. मेरे ख्याल में अगर मेरी लाइफ में 2021 ना होता तो I wouldn't have been the person I'm sitting right now. मैं बहुत डिफरेंट हो गई हूँ. I wasn't like this ever. मैं बहुत impatient सी बच्ची थी. I wanted things right at hand उसी टाइम पे. But now I can wait. I can wait easily because this was taught to me. कुछ चीजें like you're just impelled to taught. तो अगर आपको टाइम पे वेट करना पड़ रहा है तो डू बी वेट. दूसरी बात ये कि ट्राई स्ट्रेटेजिकली कि आप जो भी कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो. डू नॉट डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. डू लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क. मेरे पास टाइम बहुत सारा था बट आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि मैं ना रिपीटिशन मुझे अच्छी नहीं लगती. आई डोंट लाइक टू डू थिंग्स अगेन. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑल ओवर इट अगेन क्योंकि मैंने पहली बार बड़ी मेहनत की थी. आपस की बात है बहुत ज्यादा. आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दो आई वाज वेरी एंशियस. तो स्मार्ट वर्क करो. मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयरिंग व्हेन इट वाज माय बर्थडे, मई के एंड में. और मई के एंड में स्टार्ट किया था. आई हैड जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स. सितंबर में तो टेस्ट था ना, और उसमें से एक मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी किप्स में लास्ट मंथ में, और 2 मंथ्स में मैंने कंप्लीट किया था. सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस एंड देन स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स. अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इतना काम करने की जरूरत नहीं है दैट यू ड्रेन योरसेल्फ. ओके, you know that your chemistry is strong, you know your biology is strong, you know your physics की theory is strong, and numerical part is very difficult. Only focus on that. You know आपके लिए इंग्लिश की vocabulary आसान है, don't do it. If you think कि आप कर लोगे तो don't do it. आपको लॉजिकल, अब जैसे अब लॉजिकल रीजनिंग भी है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है. अब मुझे मैथ बहुत पसंद थी ना, मैं एक ही के लिए अच्छा तैयारी इसलिए करती थी बिकॉज आई लव मैथ. तो मैं मैथ्स रोज पढ़ती थी, लाइक इन फॉर स्मॉल टाइम बट आई वुड. और मैं कभी भी खामोशी में बैठ के अपने घर वालों को तंग करके नहीं पढ़ती थी. आई टर्न ऑन द टीवी, आई लिसन टू द म्यूजिक एंड आई डू मैथ्स बिकॉज इट्स जस्ट मैथ्स, इट्स जस्ट मैथ्स. तो आप लोग जब भी कुछ करो अपने सर पे सवार नहीं करना, ठीक है? आराम से कौन से करना. एंड टेक माई एडवाइस दैट फर्स्ट ईयर आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट डिड नॉट हेल्प मी. The next year, I was as calm as any stupid and fool can be during the entry test, and it did help me because my brain was working very efficiently. Test में there wasn't anything जो कि मैं कहूँगी कि किसी ने बहुत रट्टा मारा होगा तो उसको आता होगा. It was just about you and how you can manage your things and in one page. तो अब जो टेस्ट आ रहा है ना उसका फायदा ये है कि it's not based on your hard work of just 3 or 2 months. It's based on the hard work of your life. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एमकैट में बहुत अच्छी हो गई हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट. तो फोकस करो उन चीजों पे जो कि आपको नहीं आती हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये कि अगर एकेडमी अच्छी लगती है तो डू जॉइन इट.
if you can set your routine for yourself, don't join it. First time join करनी पड़ती है because you don't know anything. You don't know anything. लेकिन second time आपको join करने की जरूरत नहीं है. If you have a good brain इस तरह के, you have a good brain to work for yourself. यानी आपको लातों की जरूरत नहीं है, थप्पड़ों की जरूरत नहीं है बिठाने के लिए. If you know कि आपने पढ़ना है तब पढ़ लोगे. So अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट करो. लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है. लाइबा खालिद को सुनने की जरूरत नहीं है. आमना खालिद को सुनने की जरूरत नहीं है. अब्दुल्ला को सुनने की जरूरत नहीं है. डू व्हाट यू थिंक इज राइट. हम सिर्फ आपको वो बता सकते हैं जो कि हेल्प कर सकता है. सो दिस विल हेल्प यू. खुद को सुनना विल हेल्प यू. या दैट्स इट. बहुत बड़ी बिल्कुल स्पीच सही हो हो गई. गया, बिल्कुल सही हो गया. वेल, दैट वाज डेफिनेटली इंसाइटफुल. तो आई थिंक कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अगर ऐसे सम अप किया जाए कि डेफिनेटली डू what you think is right for yourself, what makes you comfortable, and eventually follow your own aims, and don't walk in the shadow or highlights of someone, and make the best of yourself. So, Baki, thank you so much, Yeah. Amna and Laiba, for being a part of this interview and taking out time. Jazakallah. And I think also, yeah. So if anyone wants to reach out, I hope I would be able to link Amna and Laiba's email address or maybe a social media handle down below if you want to reach out. And they will be your probably upcoming seniors at King Edward if you make it, and they'll obviously love to help you. So thank you so much everyone who tuned in right now in the live stream and will be watching this video later. I'll make sure to include a timestamp in the description so that you can follow on questions that we had throughout the interview. And that being said, I'm about to end the interview. So doing that, I think Allah Hafiz from our side, and we'll see you very soon, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.